All right, so we are going to begin with the concept of superposition and what is the meaning of the term superposition is, and what are the directly linked phenomena that are going to be there with respect to superposition. We are just going to disclose it in this lecture. Okay, first of all, in our daily routine, in our daily life, we can witness that there are multiple waves. If I'm talking about the electromagnetic waves, the very basic one, there are multiple waves which are present in the atmosphere, which are present in the air. uh, it's not necessary that there is only going to be one single wave passing through a space or through a point. There is a probability, there is a possibility that, let's say, if at one time there is one wave which is passing through the air, there is a high chance that there is going to be an other wave as well passing through the space or through that point. And there is likely another chance that might be there is going to be a third wave also going to be present or is passing at the same time through the atmosphere or the air. There is a very high chance. So, what we are witnessing in this specific case, that there is a chance that multiple waves are going to overlap one another. What is happening in this specific diagram being shown in front of you? That multiple waves are overlapping, or you can say multiple waves are meeting, right? So this overlapping of multiple waves, or this meeting of multiple wave, is going to give a rise to a phenomena known as superposition. एक बहुत ही common में general आपको might be this thing is not the part of your syllabus, but it is actually linked to the thing of superposition. तो आजकल के दौर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि व्हेन यू आर यूजिंग द वाईफाई, तो वाईफाई यूज करते हुए वाईफाई की सिग्नल स्ट्रेंथ तो पूरी आ रही होती है, बट व्हाट हैपेंस के यू आर नॉट गेटिंग द कंप्लीट इंटरनेट स्पीड, और यू आर नॉट गेटिंग द कंप्लीट थ्रूपुट थ्रू द वाईफाई सिग्नल. तो उसके पीछे एक रीजन, मतलब इट इज नॉट द ओनली रीजन, बट उसके पीछे एक रीजन और ये भी हो रहा होता है कि मल्टीपल राउटर्स अगर लगे हुए हों घर में, लाइक टॉप बिल्डिंग में या साथ वाले नेबर्स में या बेसमेंट है तो वहां पे, if multiple routers are present, so each router is producing what? Each router is producing the electromagnetic waves. So what happens when different electromagnetic waves are going to meet over each other or overlap on one another? So they begins to either add up or they begins to cross out one another, they begins to decrease their amplitude. So due to which, what problem occurs? Normally the Wi-Fi speed begins to get shatter. तो उसके लिए फिर करते हैं क्या है कि राउटर के अंदर कुछ सेटिंग होती है जिसमें हर वेव को एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे सेट किया जाता है, डिफरेंट चैनल पे सेट किया जाता है, जिसकी वजह से ये ओवरलैपिंग रिजॉल्व होती है, एंड one can easily get the proper throughput of Wi-Fi signal, right? So what actually superposition is all about? Superposition, the concept of superposition is related to waves, any type of waves. When any type of waves are overlapping each other, or when any type of wave is meeting or colliding or intervening with one another, then a phenomena is going to take place, and that concept is called as superposition. तो हम इस पूरे process के अंदर क्या study कर रहे होंगे? We will be studying about the concept that how two or more waves are going to overlap or cross out each other. So what different phenomena are going to take place due to it? Are you understanding what the superposition is all about? Yes, people? Yes, sir.
हेलो पीपल, आर यू विद मी? प्लीज मेक सम एक्नॉलेजमेंट सो दैट मैं साथ साथ चलता जाऊं क्विकली. तो सुपरपोजिशन is all about the intermingling of the waves, overlapping of the wave. The proper word is overlapping of the waves, right? So let's begin with the very first concept of superposition. It is known as principle of superposition, law of superposition. That what actually happens in the case of superposition, the very important principle, and it is being asked in a similar way in the examination as well. What does this rule says? This rule says when two waves meet at a point in space, जब भी दो वेव्स मिलती हैं आपस में, ओवरलैप करती हैं आपस में, कोलाइड करती हैं आपस में इन स्पेस, तो उनके रिजल्ट में एक और वेव बनती है. यानी कि उनके ओवरलैपिंग करने से अनदर वेव इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड. और उस वेव का क्या बिहेवियर होगा? उस वेव का ये बिहेवियर होगा that the resultant displacement of the new wave will be equals to the sum of the displacements of individual wave. यानी कि डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? कितना डिस्टेंस उस वेव ने कवर किया होगा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. आपके पास रिजल्ट में जो वेव बनेगी उसकी डिस्प्लेसमेंट्स को हम ऐड करके फाइनल वेव बना रहे होंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इन द एग्जाम ऑफ 2025 May June, दिस अपीयर्ड इन वन ऑफ द इन दैट स्पेसिफिक पेपर जो हमारे पाकिस्तानी रीजन का है, कि उसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्वेश्चन आया हुआ था. तो ये इसके बॉटम पे आपको एक एग्जाम्पल शो हो रही है, और ये भी एक एग्जाम का ही क्वेश्चन है बाय द वे. कि क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि लेट्स से देयर आर टू वेव्स एंड टू वेव्स आर superposing on one another. Two waves are meeting one another, so draw the resultant wave. तो resultant wave बनाने का क्या तरीका है? आप हर पॉइंट के ऊपर एक वेव की डिस्प्लेसमेंट देखोगे. अगर मैं इस वाली वेव को वेव वन कह देता हूँ जो ब्लैक में शो हो रही है, जो इधर से आ रही है इस वेव को मैं वेव टू कह रहा हूँ. और ये जो रेड में वेव आपको शो हो रही है ये रिजल्टेंट वेव है जो बनी हुई है, जो एज अ रिजल्ट में बनाई हुई है आपके लिए एज एन एग्जाम्पल के तौर पे, राइट? So there is one wave, this is one wave which is going on moving throughout यहाँ तक, and there is a second wave which is beginning from here and it is moving to the other point यहाँ तक. So I am having how many waves? Two waves, and both of the waves are overlapping, both of the waves are meeting at one point. So what does the इस पे कौन सा rule follow होगा? A rule, principle of superposition is going to be followed. What the principle of superposition says: when two waves meet at a point, the resultant displacement of the new wave, जो नई वेव आपकी बनेगी वो कैसे होगी? आपने दोनों वेव की डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देना है. लेट से अब हम करके देखते हैं. तो अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट लूं इस वाली वेव का, वेव वन का, और स्टार्टिंग पॉइंट लूं वेव टू का, तो आई कैन सी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेव वन इज जीरो, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेव टू इज टू. So what will be the displacement of my new wave? It will be 2 plus 0 will be 2. तो मेरी नई वेव कहां से शुरू हो रही होगी? It will be beginning from point 2, या displacement 2. नेक्स्ट मैं इन दोनों के कॉमन पॉइंट्स को ऐड करता जाऊंगा और फिर मैं अपने रिजल्टेंट वेव के पॉइंट्स बनाता जाऊंगा. लेट्स से इफ आई विटनेस दिस पॉइंट where my wave 1 is having a displacement of how much? 1.5. And my wave 2 at the similar point is also having how much displacement? 1.5. So if I'm going to add 1.5 plus 1.5, so 1.5 plus 1.5 will become what? It will become 3. तो मेरी जो रिजल्टेंट वेव है वो कहाँ चली जाएगी? कहाँ पे उसका नेक्स्ट पॉइंट बन रहा होगा? 3 पे. Likewise, if I just select this point where my wave 2 is getting 0, but my wave 1 is having a value of 2. So 2 plus 0 will be equals to what? 2. So 2 plus 0 is 2. So इस पॉइंट के ऊपर मेरी रिजल्टेंट वेव जो एंड वाली वेव है, या न्यू वेव जो है, इन दोनों को ऐड करके बन रही होगी. Likewise, इस तरह मैं आगे चलूं, so if I select any point on this axis, तो मैं लेट से ये वाला एक पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ. तो यहाँ पे देखें, तो द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव या डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस वेव इज हाउ मच? इट इज 1.5. एंड लाइकवाइज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकेंड वेव एट दिस पॉइंट इज हाउ मच? It is again negative 1.5. So if I add 1.5
minus of 1.5, this will be equals to 0. So 1.5 minus 1.5 cancels out one another, and I am left with a value of 0. So the value on x-axis will be giving me a value of 0. So मेरी wave अभी तक मैं अगर इन points को join करूं तो wave कैसी बनेगी? The wave will begin to move from here till here, और इन सारे पॉइंट्स को एक वेव, ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में आपने ज्वाइन करते जाना है। इसी तरह पूरी वेव को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट्स विटनेस अनदर पॉइंट जहां पे ये जीरो हो रही है। इफ माय वेव वन इज गेटिंग जीरो एंड माय वेव टू इज लेट्स से हैविंग अ वैल्यू ऑफ -2, तो जीरो -2 विल बी इक्वल टू व्हाट? -2। इसका मतलब नेक्स्ट जो रिजल्टेंट वैल्यू बनेगी वो -2 आ जाएगी। सिमिलरली इफ आई सेलेक्ट अनदर पॉइंट लाइक लेट्स से ये पॉइंट मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे दोनों वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज -1.5, तो -1.5 -1.5 बिकम्स व्हाट? -3। तो रिजल्टेंट वेव विल बी हैविंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ -3 एट दिस पॉइंट। Likewise, I'm going to add the points further जहाँ पे ये जीरो हो रही है वहां मैं के पॉइंट लेता हूँ, ये जीरो है, but the other wave, my wave one, is having a displacement of -2, so 0 -2 will be -2. Likewise, इस तरह मैं आगे चलूँ और तो if I am going to see another wave at this specific point, so at this specific point I can witness its amplitude is 2, and similarly if I just witness the other wave point, it is getting what? It is 0. So 2 plus 0 will be 2. So यहाँ पर हमारी displacement wave बनेगी। और इसी तरह मैं इन दोनों पॉइंट्स पे देखूं तो 2 at one point it will be 1.5, दूसरी वेव भी 1.5 है तो 1.5 plus 1.5 will give me 3, और लास्ट में आपके पास कितना रह जाएगा? दिस विल बी 2, और यहाँ पे ये वेव जीरो है तो 2 प्लस 0 विल बी 2। तो इन सारे पॉइंट्स को मैं आपस में अगर कनेक्ट कर दूं, what I am going to get? I am going to get the final wave which is formed by adding the two waves. This is known as principle of superposition. Yes, student, is this understandable? What does the superposition says? कि अगर दो या दो से ज्यादा वेव्स मीट कर रही हैं एक पॉइंट के ऊपर, तो उनकी जो रिजल्ट में आपके वेव बनेगी उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन से, वो कैसे आएगी? यू आर गोइंग टू ऐड देयर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स, so the resultant displacement of the new wave is the algebraic sum of the displacements of the individual waves. You are going to add up the individual waves to find out the resultant wave. And this is going to give you the result of principle of superposition. Yes, student, tell me, is this understandable? Uh, any question in this specific part? Okay, good. So do you should what you have to learn in this? You have to memorize this whole definition of principle of superposition, and secondly आपको ये ग्राफ बनाना आना चाहिए कि अगर दो वेव्स हैं हमारे पास, तो हर दोनों पॉइंट के ऊपर आपने दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करते जाना है वर्टिकली, और आपके पास फाइनल वेव आती जाएगी। So this is how you are going to plot the resultant wave or a wave formed as a result of superposition. So moving onwards to the next concept, our next concept is interference. So it's a general word of English, like mostly most of you when two of the people are talking, and let's say third person intervene in your talk. So what actually that third person is trying to do? It is trying to interfere. Similarly, जब waves आप एयर में या किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं, तो वेव्स की क्या पॉसिबिलिटी है? द टू और मल्टीपल वेव्स कैन डू व्हाट? दे कैन overlap, they can meet at a point. When two of the waves are going to meet or overlap at a point, they are going to give rise to a phenomena known as interference. इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? यानी कि जो जो सुपरपोजिशन की एग्जाम्पल है या सुपरपोजिशन
की वजह से क्या हो रहा होता है, ड्यू टू सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस इज कॉजिंग, ड्यू टू सुपरपोजिशन, due to superposition, what you do, you actually, you add up, super, due to superposition, both the waves are going to meet at a point, they are going to overlap, and as a result of that they are going to interfere. So interference क्या होती है? Write down this definition with you. What is interference? Interference occurs when waves overlap, when two or more waves, या अब यहाँ पे लिख सकते हैं interfere occurs when two or more waves overlap and their resultant displacement is the sum of the displacement of each wave. यानी कि जो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन है वो इंटरफेरेंस के ऊपर फॉलो करता है, या इंटरफेरेंस इज द रिजल्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होल्ड्स फॉर इंटरफेरेंस फिनोमेना। तो जब भी दो वेव्स हैं अगर वो ट्रेवल कर रही हैं तो वो आपस में टकरा जाती हैं, मीट कर जाती हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि दोनों का नेचर सेम हो। both should be, let's say if we are talking about water waves, so both of them should be water waves. If we are talking about microwaves, so both of them should be microwaves. If we are talking about, let's say, light waves, so both of them should be the light waves. So the nature of the wave should remain what? It should be same. So interference occurs when two or more waves overlap and their resultant displacement is the sum of the displacement of each wave. दोनों wave की displacements को आपस में add up करोगे. This result is based on the principle of superposition and the resultant wave may be smaller or may be larger. तो आपकी जो इंटरफेरेंस के रिजल्ट में हो सकता है आपकी वेव बिल्कुल ही खत्म हो जाए, या हो सकता है आपकी वेव और ज्यादा बड़ी हो जाए. So if your wave is increasing in size, it is going to be called, such type of interference will be called as constructive interference. And if your wave is demolishing, it is called as destructive interference. So interference दो waves की दो तरह की हो सकती है. There can be two types of interference. Either the interference is going to be constructive interference, either the interference is going to be constructive interference, or the interference can be called as destructive interference. Either the interference is going to be constructive or the interference is going to be destructive. So there are two possibilities for the interference going to happen. Now, what is the difference between constructive and destructive interference? We are just going to find it out. So very first thing, what are the conditions of equal interference? The conditions of interference is that the waves must meet at one point. Both the waves should be having a same nature. Both the waves should be having same frequency. And both the waves should be coherent. कोई आप में से मुझे मीनिंग बता सकता है? What is the meaning of coherent? What is the meaning of two waves are said to be coherent? इसका क्या मतलब होगा? एग्जाम क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है. Can anyone tell me? I have taught you this word before as well. Two waves are coherent, or there is a coherence between two waves. What it actually mean? Can any one of you state the meaning of this? That they both have the same wavelengths and the same time period. अच्छा, better word is that both are having, ये अपने पास लिखें कहीं पे. What is the meaning of coherent? Both are, both waves, both waves are having constant phase difference. इसका मीनिंग क्या है? both waves are having what? Both waves are having constant phase difference. दोनों waves का जो phase difference है वो क्या होगा? Both of the waves are going to have a constant phase difference. So these are the conditions required for the interference to happen. These are the conditions required for the interference to work.
These are the conditions required for the interference to be workable. So क्या conditions necessary हैं इसके लिए? The waves must meet at a point. The waves must be of same nature. The wave should have the same frequency, and the waves should be coherent. The waves should be coherent means they should be having a constant phase difference. मैं coherent की अभी diagram आगे चल के आपको दिखाता भी हूँ. Is this done? Shall I move on? जब तक ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी आपके इंटरफेरेंस नहीं होगा. Everyone is with me? जी Okay, moving onwards to the diagrams of the interference. तो अब जरा गौर से देखिएगा कौन सा इंस्टेंट है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी. जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, लेट्स से मेरे पास ये वेव वन है, ठीक है, इसको मैं वेव वन बोलता हूं, और मेरे पास नीचे ये वेव टू शो हो रही है, ठीक है. वेव वन है ऊपर और नीचे क्या है, वेव टू. तो आप देख सकते हो जहां पर इसका वेव वन का क्रस्ट है और जहां पे वेव टू का क्रस्ट है और जहां पे वेव वन का ट्रफ है, एंड वेयर देयर इज अ ट्रफ ऑफ वेव टू, अगर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फॉल करेंगे, अगर वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फॉल करेंगे, सो दे आर गोइंग टू एड अप, और द रिजल्टेंट वेव इज गोइंग टू गेट डबल. यानी कि उनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, डबल. लेट्स से इसका एम्पलीट्यूड है ए, एंड हियर द वेव इज हैविंग एन एम्पलीट्यूड ऑफ ए, राइट. Wave 1 is having an amplitude of A, likewise wave 2 is having an amplitude of A. When both wave 1 and wave 2 are going to add up, or they are going to interfere, and as a result if their amplitude gets double, उनका amplitude क्या हो जाएगा, double हो जाएगा, this type of interference is called as what? Such interference is called as constructive interference. ऐसी इंटरफेरेंस को क्या नाम दिया जाएगा? Such interference will be called as constructive interference. तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को? When two waves of same nature and frequency overlaps in such a way that crest falls on crest and trough falls on trough, it is known as constructive interference. It will be called as what? Constructive interference. जब दो वेव्स जिनका नेचर सेम हो, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, और वो ओवरलैप करें इस तरह कि एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे फॉल करे और एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे फॉल करे, so such type of wave will be called as what? Yeah, such type of interference will be called as what? Such type of interference will be said as constructive interference. Yes, is the concept of constructive interference understandable? Yes, sir. Sir, do we have to learn this definition? Yes, you should be noting down the words. You must be knowing about these terms. So when two waves of same nature and frequency overlaps in such a way that crust falls on the crust and trough falls on the trough of another wave, यहाँ पे एक word लिख लीजिएगा, of another wave here, then such type of interference will be called as constructive interference. Shall I move onward? Yes, sir. Okay.
What is destructive interference? Destructive means नाम से पता चल रहा है destruction is happening. Destruction means something is wiping out, something is finishing, something is vanishing, right? So what is happening in the destructive? So you can say this is, let's say it is one of our wave, it is my wave 1 and it is my wave 2. There are two waves and these two waves are overlapping with one another. Wave 1 is overlapping with wave 2. So what will happen? Let's say my wave 1 is having an amplitude of A and this is having an amplitude of, and likewise, let's say this is having an amplitude A and this is having a displacement of minus. So if the crust of one wave falls on the trough of another and trough of one wave falls on the crest of another and similarly the crust of one falls on the trough of another, what will happen? Both the waves are going to cancel out each other, and as a result you will be getting zero wave. As a result of this, the there is going to be no wave produced as a result of destructive interference. So in case of destructive interference, if the crest falls on the trough and trough falls on the crust, both waves cancels out and your resultant wave will be zero. So such type of interference is called as destructive interference. So destructive interference, constructive interference. अब इसके बारे में भी मैं आपको लिखवा देता हूँ. When two waves overlaps, having a phase difference, having a phase difference of 180 degree. ठीक है? When two waves overlaps having a phase difference of 180 degree in such a way, in such a way that crest of one falls on trough of another. ठीक है? Crest of one falls on trough of another, then such interference is destructive. ठीक है? Such interference will be called as what? Such interference will be called as a destructive interference. So when two waves overlaps having a phase difference of 180 degree in such a way that crest of one falls on the trough of another, then such interference is called as destructive interference. तो याद रखिएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है. both waves both waves are out of phase by 180 degree. And if we talk about the constructive interference, तो दोनों वेव के अंदर जो फेज डिफरेंस है दैट शुड बी 0 डिग्री. अब देखो ना, ये भी वेव 0 से स्टार्ट हो रही है, ये भी 0 डिग्री से स्टार्ट हो रही है, तो इनके दरमियान फेज डिफरेंस जो है वो 0 है. बट अगर मैं डिस्ट्रक्टिव